हम जिस चैलेंजिंग टाइम से गुज़र रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो फाउंडर्स जो कि एक्चुअली बिज़नेस सेवी हैं और बिज़नेस करना जानते हैं या सीख रहे हैं, वेरी जल्दी से सीख रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि हम एक्चुअली बिज़नेस कर सकते हैं विदाउट रेजिंग इन्वेस्टमेंट्स, जिसकी वजह से बहुत सारा जो आपको ये इस पीरियड की क्रॉप आपको जो आज से 5 साल के बाद नज़र आएगी, जो कि इस डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर के निकली है, दे विल बी वे बेटर देन एनीबडी इमेजिन्स राइट नाउ। यूके में 98% कॉन्ट्रैक्टिंग डिस्प्यूट्स जो हैं वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाते हैं। 98%। सिर्फ 2% डिस्प्यूट्स हैं जो कोर्ट्स में जाते हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों साइड के लॉयर्स को पता है कि अगर हमने अननेसेसरीली एक मैटर को कोर्ट में ड्रैग किया तो ना सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ फैसला होगा बट उसके साथ साथ हमें दूसरे लॉयर की फ़ीस भी भरनी पड़ेगी। अच्छा फाउंडर वो है जो अपने इन्वेस्टर के पास खुद जाता है, जाके उसे गाइडेंस लेता है, उसको तंग करता है कि मेरी हेल्प करो, मेरे लिए ये दरवाज़ा खोल के दो, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके दो। Assalamualaikum guys, welcome to another episode of the True Essence podcast. Today we have Barrister Ahmed Uzair with us. Welcome sir, how are you? I am good, thank you for having me. Acha, let's give a quick introduction for our audience. My name is Barrister Ahmed Uzair. I am a lawyer by profession and I primarily specialize in investment law. Yeah, acha, aapka, you have like a 13-year experience and you're like a very renowned investment lawyer as well, and you're a startup lawyer as well. Pakistan का ecosystem इस perspective से describe कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। जब प्लान 9 बना तो उसी टाइम एक इंट्रोडक्शन हुई। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में ख़ुद भी इंटरेस्ट था, तो आई एंडेड अप जस्ट ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स प्लान 9। और वहाँ पे जाके मैंने एक दफ़ा लेक्चर दिया स्टार्टअप्स को, और उसमें जो एनर्जी थी दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव। तो आई एंडेड अप जस्ट कमिंग बैक टू डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स ओवर द इयर्स। प्लान 9 के बाद लम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप बना, उसके बाद फिर डिफरेंट NICs बने, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, तो मैं उनके साथ अटैच हो गया। आई वुड टिपिकली जस्ट गो टू दीज इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड give a lecture on entrepreneurship. It's been an interesting journey, as I said. जो ecosystem है उसने माशाल्लाह पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। बहुत सारे फाउंडर्स आए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, बहुत सारे VCs आए और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई, और आई वाज वेरी लकी कि मैं उस स्पेस के अंदर था राइट द राइट टाइम। और मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ इस कॉन्टेक्स्ट में वो कम है। अच्छा, तो you started working with Umar Saif and Nabil Kadir on Plan 9. Tell us, how did that work out first of all? प्लान 9 जब बना तो उस टाइम उमर सैफ की टीम में एक थे जेंटलमैन हु इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, और उन्होंने बड़ी हद तक मेरी उंगली पकड़ी, मुझे अपने साथ चलाया। उनका नाम है खुरम ज़फ़र। उन्होंने मुझे बुलाया, उनको पता था कि मैं लॉयर हूँ और मैं लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। एंड वाज अ यंग लॉयर एट द टाइम, मैंने साल हुआ था अपना काम शुरू किए हुए। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने फिर बेसिकली जो उनके उस टाइम इंक्यूबेटीज़ थे उनके साथ एक सेशन किया ऑन लॉ एंड लीगल मैटर्स। प्राइमरी फोकस जो उस टाइम था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज था, और वो एक एरिया है जो कि ऑब्वियसली हम, क्योंकि नॉलेज, ये सारे स्टार्टअप्स जिनकी बात करते हैं ये नॉलेज इकोनॉमी के स्टार्टअप्स हैं, तो एज अ रिज़ल्ट इनकी जो वो फोकस था वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही था। अच्छा, you worked with very earlier startups or incubators. What do you think तब का और अब का, what are the main challenges that you faced then, and what are the challenges that are still there in the market right now? सो जो बेस्ट एनालॉजी है वो ये कि बैक इन द डे 2013, 14, 15 में जो स्टार्टअप्स थे उनको एंटरप्रेन्योरशिप एज एन आइडिया सेल करना पहले होता था बिफोर वो अपने बिजनेस के बारे में कुछ जिक्र करते। सो एज एन एग्जांपल, आई नो फाउंडर्स जो कि अपने घर वालों से लड़ते थे कि हमने नौकरियां नहीं करनी और हमने एक्चुअली एक अपना स्टार्टअप शुरू करना है। आज थैंकफुली 2023 में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बच्चा कहता है कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है और मैं अब अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ और मुझे
तो वो उस तरह की मुझे फील होता है कि बच्चों को वो उस तरह रेजिस्टेंस नहीं मिलती जिस तरह थी. सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट. इन मैनी वेज जो माइंडसेट है इन्वेस्टमेंट का वो भी चेंज हो गया है. जो 2013, 14, 15, 16, इवन 17 तक जो इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस थी उसमें इन मैनी वेज इन्वेस्टर्स का जो माइंडसेट होता था वो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस ज़्यादा था. आज स्पेशली जो 2020 और फिर 2021 का जो बूम था, उस बूम साइकिल में बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई उसमें द पेंडुलम वाज एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड. देयर वाज हार्डली एनी चेक एंड बैलेंस. तो अब वी आर कमिंग बैक टू मोर लाइक इन द मिडल. Yeah. अच्छा, so let's talk about के startup ecosystem में पहले ना I feel like there was a very market gap बहुत ज़्यादा बढ़ा था between the investors and the startup के founders के दरमियान. What do you think के what changed it like right now? For sure, quality of startups has improved. So, in terms of understanding जो है मार्केट की प्रॉब्लम्स की और जो उसके बारे में जो उसकी एग्जीक्यूशन है दैट इज़ वे बेटर देन बिफोर. एंड आई फील आई शुड गिव क्रेडिट टू NICs, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, क्योंकि उन्होंने एक सर्टन इकोसिस्टम को फ्लरिश किया. उस इकोसिस्टम में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आए. उन स्टेक होल्डर्स ने अपनी इनपुट्स दी, बहुत सारी बिजनेस गाइडेंसेस एक्सेट्रा फाउंडर्स को मिली. सो आई फील के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे आर बेटर इक्विप्ड compared to, for example, 10 years ago. Yeah. Acha, definitely. You help startups with the intercompany matters and the IP trademarks and copyrights. You also help them acquire the investment documents. Acha, take us through the process of when a young company reaches out to you. What is your go-to stuff? Sure. So, basically मैं अपनी जो एडवाइस है उसको चार एरियाज में स्ट्रक्चर करता हूँ. Number one is regulatory compliances, right? So आपने टैक्स देना है, टैक्स किस तरह देना है, टैक्स क्या होता है, अगर आपकी कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसमें किसी किस्म का कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो वो क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड है, एक्सेट्रा. तो दैट इज़ वन. टू इज़ बिटवीन फाउंडर्स मैटर्स हैं. फॉर एग्जांपल आपने को फाउंडर्स एग्रीमेंट है, कोई एम्प्लॉय मैटर्स है, एक्सेट्रा. सो दैट इज़ द सेकंड एस्पेक्ट. थर्ड इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करना है, आपका जो ब्रांड है उस ब्रांड की प्रोटेक्शन करनी है ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके, दैट इज़ योर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन. आपकी एक सर्टन यूज़र एप्लीकेशन है जिसकी एक सर्टन लुक एंड फील है, दैट इज़ योर कॉपीराइट. और अगर आपने कोई ऐसा सोल्यूशन डेवलप किया है जो सोल्यूशन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसकी कोई फिज़िकल एप्लीकेशन भी है तो आप उसको फिर पेटेंट भी करते हैं. तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. एंड द फोर्थ इज़ इन्वेस्टमेंट्स. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी इन्वेस्टर से फंडिंग रेज करनी है तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, राइट? अगर आपने उसी में इन्वॉल्व है कि अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करना है तो हो सकता है आपको उसके लिए अपनी होल्डिंग कंपनी पाकिस्तान से बाहर बनानी पड़े, तो वो होल्डिंग कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या है. सो दैट इज़ द फोर की एरियाज इन विच वी हेल्प स्टार्टअप्स. Acha, as an investment lawyer, you've dealt with a lot of giant companies and you've helped them in different ways. What do you think एक जो investment डालने के लिए जो बंदा बैठा होता है, what is the key features that he looks for in an entrepreneur and the business? मैं इस सवाल को दो स्टेप्स में डिवाइड करूँगा. जो इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टर है वो दो कैटेगरीज के हैं इन माय ओपिनियन, ब्रॉडली स्पीकिंग. एक कैटेगरी है जो अर्ली स्टेज एंजल इन्वेस्टर है. जो अर्ली स्टेज एंजल इन्वेस्टर होता है वो उसका फोकस फाउंडर है. दे वांट टू सी कि आपके अंदर what do you have the entrepreneurial spirit, are you dedicated, hard working, are you living and breathing your business, या आपके लिए सिर्फ एक रूटीन की चीज़ है. So they look at you as a person. It's less about the business model, it's less about the 5-year business plan. They may ask for it, but primarily what they are focusing on is you as a person, you as a and how what are your values. अगर वो आपकी वैल्यूज़ उस इन्वेस्टर की वैल्यूज़ के साथ रेजोनेट करती हैं तो वो आप में इन्वेस्ट ज़रूर करेगा.
सो दैट इज़ कैटेगरी नंबर 1. जो कैटेगरी नंबर 2 है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिसने सब्सटैंशियल कैपिटल इंजेक्ट करना है, और उसके लिए जो बिज़नेस है उसकी एक सर्टन स्टेज रिक्वायर्ड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपने अपनी एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बिल्ड कर ली है, उसके बाद उस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को आपने मार्केट में जाके टेस्ट कर लिया है और एक सर्टन बेंचमार्क इस्टेब्लिश करके दिखा दिया है कि दिस इज़ पॉसिबल, यू कैन एक्चुअली डू दिस, and the investment that you need is now going to be used to grow the business. So हुआ ये कि 2020 और 2021 का जो बूम साइकिल था उसमें बहुत सारे फाउंडर्स ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रेज की, लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन इन्वेस्टर्स ने नहीं पूछा, एंड दैट वाज पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी. कि आपका बिजनेस वायबल भी है कि नहीं, और या कब वायबल होगा. आज का जो इन्वेस्टर है 2023 का, वो आपसे आपकी वायबिलिटी पूछता है. दे एक्सपेक्ट कि अगर वो एक सर्टन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो देयर इज़ अ वेरी क्लियर रोड मैप जिसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएंगे. तो दैट इज़ व्हाट द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज लुकिंग एट. अच्छा अहमद, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट के आजकल के एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल. And I think more in the Pakistani economy especially. What are the key main things that people fail to acknowledge while seeking out investors? So जो statistic है, this is a very common reported fact कि जी 90% startups fail. I don't think this study has been done in Pakistan. So this was a study in the US जिसको ये reference किया जाता है. I don't know if it is true that 90% of startups fail, but I know for a fact from experience, and I know this is anecdotal, but from experience, one of the single biggest factor for failure is founder dispute. So एक से ज़्यादा जब भी founders हैं, उनकी mismatched expectation जो है वो single biggest point of failure होता है. एक founder जो है वो 7 days a week 80-90 आवर्स अ वीक काम कर रहा है. दूसरा फाउंडर जो है वो लेट्स से दूसरी नौकरी भी कर रहा है, वो सिर्फ वीकेंड पे आता है, आके 2 दिन लगाता है, और वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके वो भी इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, और इक्विटी उसने 50-50 की हुई है. तो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट विल बी कि जो 7 डेज काम कर रहा है वो एक फाइनली एक पॉइंट पे आके ब्रेक कर जाएगा. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. आई फील कि स्पेशली अगेन उस बूम साइकिल का एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को इक्वेट करते हैं विद फंड रेजिंग. आई थिंक एटलीस्ट हम जिस चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो फाउंडर्स जो कि एक्चुअली बिजनेस सेवी हैं और बिजनेस करना जानते हैं या सीख रहे हैं, बहुत जल्दी से सीख रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि हम एक्चुअली बिजनेस कर सकते हैं विदाउट रेजिंग इन्वेस्टमेंट्स, और जिसकी वजह से बहुत सारा जो आपको ये इस पीरियड की क्रॉप आपको जो आज से 5 साल के बाद नज़र आएगी, जो कि इस डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर के निकली है, दे विल बी वे बेटर देन एनीबडी इमेजिन्स राइट नाउ. और मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा. वी हैव सीन दिस एग्जांपल्स इन US फॉर एग्जांपल के जो .com बबल था उसमें बहुत सारा जो फ्लफ़ी बिजनेसेस थे जिनके अंदर कोई फाउंडेशन नहीं थी वो तो ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट. लेकिन जो बिजनेसेस उस पीरियड में बने, पेपाल, अमेज़ॉन, जो उस पीरियड से निकल के आए, दे आर multi-billion dollar businesses and in some cases multi-trillion dollar businesses, right? So I feel कि ये चीज़ ज़्यादती है या ये एक mismatched expectation है कि हमने एक ये इक्वेट कर लिया है कि आपकी सक्सेस जो है एज एन एंटरप्रेन्योर वो ये है कि आपने फंड रेज किया. अगेन दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि बहुत सारे केसेस में मैं देखता था फाउंडर्स को लोग मुबारकबाद देते थे कि जी मुबारक हो आपने फंड रेज कर लिया. एंड आई ऑलवेज फाउंड इट अ लिटिल ऑड, क्योंकि जब आपने फंड रेज किया है तो उसका मतलब ये है कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है. तो एक्चुअली इट्स योर लाइफ इज़ बिकमिंग मोर डिफिकल्ट.
तो पहले तो इजी थी. तो congratulation is when you have successfully built a business, not when you have raised money. So I feel that वो जो success का barometer है वो fundraising नहीं होना चाहिए, वो actually business खड़ा करना. Acha, Ahmed, I think many of the people that come into the startup ecosystem, I think one of the things that they go towards is like, we want to raise capital, right? Yeah. We want to go rounds after rounds after Yep. rounds. Why do you think Pakistan has failed to provide more unicorns in the market? So एक तो ये कि मैं before I answer your question, I want to say one thing related. Bad founders attract bad investors. And 2020 and 2021 demonstrated that. A lot of people who raised money very quickly, ridiculously quickly, were actually not executing in a very good manner. And their failure is a demonstration of their poor execution, not poor fundraising. They were very successful in that definition because they raised a lot of money. Lekin the fact that they failed is not because the business didn't make sense. It was not because it was anything else. It's primarily because they were poor in execution. And now, so to answer your question, why success, why fundraising is a challenge for many of the founders is primarily because there is that mismatched expectation. Now, founders who are solid businesses are still raising money. ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान में फंडिंग ख़त्म हो गई है. It is not as 2021 और बहुत सारी जो ridiculous valuations थी वो भी नहीं है. बहुत सारी जो और primarily it was fueled by investment from abroad. वो उस तरह वो volume बाहर से नहीं आ रहा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही. अच्छे फाउंडर्स अभी भी फंड रेज कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट हो रही है. बहुत सारे अनाउंस नहीं कर रहे बिकॉज दे डोंट वांट टू पब्लिसाइज अ स्मॉल राउंड, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो रही है. It's just what it is. Ahmed, you worked with the government and you were involved with the previous government's drafting of companies and Company Act and like crowdfunding. You've also worked with SBPs, foreign exchange. Let's talk about that. So 2018, 2019 provided a very interesting environment जहाँ पे बहुत सारी एक एक्साइटमेंट थी. उस एक्साइटमेंट में बहुत सारी रेगुलेशंस ड्राफ्ट हो रही थी और बहुत सारी पॉलिसी साइड पे काम हो रहा था. आई वाज वेरी लकी कि अगेन अल्लाह का शुक्र है, somebody just picked my hand and said कि जी आप इसमें इंटरेस्टेड हैं. मैं उसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं कई दफ़ा इस्लामाबाद में मीटिंग होती थी तो मुझे रात को तकरीबन 8-9 बजे मैसेज आता था कि जी सुबह 9 बजे मीटिंग है. तो मैं रात को लेट जो है वो बस पे बैठता था और बस पे बैठ के मैं सुबह पहुंचता था. अच्छा, गाड़ी मेरे पास एक थी. वो मेरी गाड़ी जो है मेरे बच्चे को स्कूल पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होती थी, तो मैं अपनी गाड़ी पे नहीं जा सकता था. तो रास्ते में या सुबह जब मैं इस्लामाबाद पहुंचता था तो पता लगता था कि ये मीटिंग कैंसिल हो गई है. तो देन आई वुड जस्ट गो बैक. और वो टाइम जो था, अच्छा उस टाइम एनर्जी भी ज़्यादा थी. आई वॉज मोर एक्साइटेड. दो चीज़ें हैं. एक तो ये कि उसमें मेरा कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी. आई वॉज जस्ट एक्टिंग इन एन अनऑफिशियल कैपेसिटी. मुझे कहा गया कि जी आप इसमें ड्राफ्टिंग में हेल्प करें, तो मैंने उसमें हेल्प की. लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना सेटिस्फाइंग काम था. बिकॉज नोइंग कि एक लेजिस्लेशन की ड्राफ्टिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, इससे ज़्यादा इंजॉयबल चीज़ नहीं हो सकती. बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट इट हैड. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने CCP के साथ भी काम किया, मैंने स्टेट बैंक के साथ भी काम किया. स्टेट बैंक के साथ इट वाज मोर अगेन ऑन एन अनऑफिशियल कैपेसिटी. उन्होंने फीडबैक मांगा, वो मैंने फीडबैक दिया. लेकिन अगेन एज आई सेड 2018, 19, 20 ये वो पीरियड था जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलिसी साइड पे काम हो रहा था. तो आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट. अच्छा अहमद, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट कि ना पाकिस्तान की मार्केट जो है, स्पेसिफिकली जो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारे,
they're starting to shift their focus. As you said, they should focus more on like building businesses without much investment, without raising much capital, right? So I think Pakistan जो है, it's a very monopolized market, right? यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, they don't want the other players to get in or whatever, take their market shares. It almost becomes impossible. Yeah. What do you think? Why should people be more, more have their focus more on like building businesses without much capital? स्टार्टअप इकोसिस्टम में ना एक बड़ा ही घिसा पिटा सा लफ्ज़ है, उसका नाम है डिसरप्ट। कहा जाता है डिसरप्टिव बिजनेस है ये एक इंडस्ट्री है, मैं इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट disrupt the ecosystem, disrupt the way everything. तो वो जो अनफॉर्चुनेटली लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं या एग्जिस्टिंग हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े वेल इंट्रेंच्ड होते हैं और वो इजीली अपनी उस पेनिट्रेशन को और उस एक्सेस को इजीली गिव अप नहीं करते। सो दैट इज़ वाई स्टेपिंग इनटू समबडी एल्सेस शूज़, स्पेशली एक इटालियन फ्रेज़ है बड़ा ज़बरदस्त था, वो ये कहता है कि कभी भी किसी इंसान की ना ब्रोजी ना मारे। सो अगर आप डिसरप्टिव बिजनेस कर रहे हैं तो यू आर एक्चुअली स्टेपिंग ऑन समबडीज टोज, राइट? सो यू शुड नो दैट एंड यू शुड एक्सपेक्ट सम कॉन्सिक्वेंसेस। सो येस, आई एग्री विद यू कि it's not very easy to disrupt, and it's not easy for somebody new to come in and do a business, especially अगर आपकी उसमें पहले से access नहीं है। But my point is this, कि capital is not the answer to this question. अगर आपने disrupt करना भी है और अगर आपने किसी एक problem आपने identify की और आप उस problem को solve भी करना चाह रहे हैं, तो कैपिटल अलोन इज़ नॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट लोग ये समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, उसका बैंडेड जो है ना वो कैपिटल है, हम जितना पैसा फेंकेंगे उस पैसे से मसला सॉल्व हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आई फील कि इफ़ यू आर ग्रोइंग ऑर्गेनिकली then in that situation you are more likely to build longer tentacles and you are able to build presence, and उसके बाद आपको एक कैपिटल मिलता है तो वो आपको फिर फ्यूल लगाता है कि फिर आप दौड़ लगाते हैं। अच्छा अहमद, एक और चीज़ है, आई थिंक जब हम देखते हैं ना आउटसाइड द पाकिस्तानी मार्केट, आई थिंक हर एक कैटेगरी में ना देयर आर 6 से 7 मेजर प्लेयर्स हर जगह, ठीक है, एंड दे आर कम्पीटिंग ऑन जस्ट वेरी थिन मार्जिन्स, ठीक है, एंड दे आर मेकिंग ईच अदर डू बेटर। एंड अब हम पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है, देयर लाइक हर मार्केट शेयर जो है ना, आई थिंक मेजॉरिटी कंपनीज का देयर लाइक 30-40-50% मार्केट शेयर होता है उनका। दे डोंट लेट द अदर कंपनीज स्ट्राइव टू मेक द प्रोडक्ट बेटर, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू डू सो? इसका पहले फिलोसॉफिकल आंसर देता हूँ, फिर आई कैन गिव यू अ प्रैक्टिकल आंसर। फिलोसॉफिकल आंसर इज कि अनफॉर्चुनेटली वी हैव पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस। So for example, Pakistan has a very robust competition commission law. And Competition Commission of Pakistan is a very robust organization, particularly designed to enforce anti-competitive practices. But unfortunately, the big businesses who are able to cartelize and are able to function and operate in a cartel-like manner, essentially do so because वो regulations उस तरह implement नहीं हो पाती जिस तरह वेस्ट में होती हैं। और उसकी again, purely from a philosophical point of view, the fundamental issue is कि consequences of breaching a regulations are not severe enough. Yeah. So for example, अगर आप एक इसी तरह की कोई वायलेशन करते हैं जिससे लेट्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो यू नो कि यू आर एबल टू मैनेज थिंग्स इन पाकिस्तान इन अ वे कि आप रेगुलेशंस आप पे ना इम्प्लीमेंट हों किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो इंटरेस्ट ग्रुप्स बन जाते हैं, उसके बाद वो एडवोकेसी करना शुरू कर देते हैं विद द गवर्नमेंट कि जी देखें हम तो ये एक्सपोर्टर्स हैं और अब हमें आप ना रोकें, so वो they're able to function without any legal consequences. Yes. To answer it more from a practical point of view, I feel कि
we are not as sophisticated economy as many of our neighboring countries हैं. उस तरह जो कंपटीशन है, जो जिस कंपटीशन की आप बात कर रही हैं कि कंपटीशन होना चाहिए और कंपटीशन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उस तरह कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता. Yeah. और इकोनॉमी का साइज़ भी उतना बड़ा नहीं है. थर्ड एस्पेक्ट इज़ कि a big percentage of our economy is undocumented, and as a result आप वो structural issues हैं, but fact remains कि आपकी इकोनॉमी का बहुत सारा परसेंटेज जो है वो टैक्स नेट से भी बाहर है, वो रेगुलेटरी लैंडस्केप से भी बाहर है, वो कंप्लायंस के उसके नेट से भी बाहर है. So as a result, they are operating in a different world. Acha, Ahmed, you worked extensively with the government and you know the ins and outs and everything. For the past 2 years, you helped bring like $40 million in investment to Pakistan. Do you think that the policymakers of Pakistan favors the rich? I agree. Yes. So basically, in our country, the rules and regulations are primarily there to favor people who are already in power and people who are well off. There is no two ways about it. And so, yes, if you are, for example, from a privileged class and you are already working in a multinational organization, you are more likely to raise money than, let's say, somebody from Mandi Bahudil. Yeah. Or Amir Khan, where I'm from. So I feel that yes, there is a certain amount of structural issue in the way the business of the government is run, and so yeah. Acha, Ahmed, I think there's a major issue in Pakistan of law and order, not just in a very niche spaces, just overall generally. So, what do you think will make this situation a bit better? Just even in the market space, what will make it better? Since I'm a lawyer, so I think the solution to our problems is from my lens. So, and that is enforcement of laws, right? So, chahe civil side pe, it's enforcement of contracts, and from a criminal side, it's a robust law enforcement agency, right? So, on both sides, agar हमारी मुल्क में लॉ इन्फोर्समेंट बेहतर हो जाए, चाहे एज अ सेट कोर्ट, अगर 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक ने वायलेट किया है, दूसरी उसको इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जाती है, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए अगर 10 साल लग जाते हैं, तो you are creating an incentive for people to violate the contract. Yeah. And I feel ke bad judicial system because of, a lot of reasons, but including under-resourced cases, हज़ारों लाखों cases हैं, लेकिन कि there are not enough judges, for example. So वो बहुत सारी problems हैं जिसकी वजह से हमारा judicial system उस तरह efficient नहीं है जिस तरह होना चाहिए. And as we were discussing before, it's to do with consequences. Lack of consequences. Yes. So if you know कि अगर मैंने contract violate किया तो उसकी penalty इतनी severe होगी कि मुझे इस contract की violation नहीं करनी, तो आप violation नहीं करेंगे. तो जिस तरह अल्लाह के निज़ाम में हमें पता है कि हम नेकी करेंगे तो हमें उसका सवाब मिलेगा, अगर हम गुनाह करेंगे तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी और हमें उसकी फेयरनेस पे कोई शक नहीं है. तो उसी तरह ही अगर हमारा दुनियावी जुडिशल सिस्टम भी उसी तरह फेयर, जितना फेयर ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन खुद ही ज़्यादा होगी. एक छोटी सी स्टैटिस्टिक आपको बताता हूँ. यूके में 98% कॉन्ट्रैक्टिंग डिस्प्यूट्स जो हैं वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाते हैं. 98%. सिर्फ 2% डिस्प्यूट्स हैं जो कोर्ट्स में जाते हैं. उसकी वजह यह है कि दोनों साइड के लॉयर्स को पता है कि अगर हमने अननेसेसरीली एक मैटर को कोर्ट में ड्रैग किया तो ना सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा, बट उसके साथ साथ हमें दूसरे लॉयर की फ़ीस भी भरनी पड़ेगी. तो जो पार्टी डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है उसको पता है कि मैं अगर आज मुझे 50,000 पाउंड मैंने पे करने हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, अगर मैंने उस दूसरे ने कोर्ट से वो 50,000 लिए तो वो 50,000 भी देने पड़ेंगे, प्लस शायद 5 लाख
पाउंड जो है मुझे उसके दूसरे के लॉयर की फीस भी भरनी पड़ेगी. तो इट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कि लोग अननेसेसरीली चीज़ को कोर्ट्स में ड्रैग नहीं करते. Yeah, definitely. Acha Ahmed, let's talk about the education sector. ठीक है, you're being a lawyer yourself. You've studied law extensively and you know everything about it. I think there's a lack of, not everything, let's just say the basics, but like more than the next person, right? So there's a very lack of, you know, just exposure to certain law practices and the way people carry on day-to-day basis in certain youth, right? I think it stems from coming from an educative background where there is a lack of exposure and awareness. Why do you think कि पाकिस्तान का एक ऐसा निज़ाम बनाया गया है कि it puts forth that lack? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया की हर यूथ जो है वो लॉ को इम्पोर्टेंस नहीं देती. सो चाहे आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, द मोर young you are, the less care you have, and care or you know, fear of consequences are drilled into you over time because you see consequences. तो अगर मैं अपनी भी बात करूँ, as a 20-year-old or a 19-year-old, I was far less careless as a 39-year-old. I think you should be. If you are very careful, something is wrong with you. Yeah, there you go. So I think the fundamental point around this issue is कि, and I'm not saying कि I wouldn't want to say कि स्कूलों में laws को पढ़ाना चाहिए, but I certainly believe कि civics is something that should be part of curriculum in the schools. चाहे वो it starts from cleaning, right? हमने ये कहानियाँ सुनी है जापानीज़ की कि वो जाते हैं, जाके कहीं भी किसी जगह जाते हैं तो वहाँ से पे सफाई करना शुरू कर देते हैं. क्यों? इसलिए कि उनको स्कूल के बच्चों को कहा जाता है कि जी आपने अपने स्कूल को साफ़ रखना है, आपने अपने स्कूल के सामने जो सड़क है उसको साफ़ रखना है, एंड दे डू दिस क्लीनिंग थिंग्स. तो इस तरह जो सिविक्स आप अपने स्कूल में और आप अपनी इन्वायरमेंट में देखते हैं, आप भी वही सीखते हैं. I'll give you another example. I'm sure आप लाहौर में रहती हैं, लाहौर से इस्लामाबाद आती जाती हैं, आपने कई दफ़ा मोटरवे पे आते जाते लोगों को देखा होगा कि लोग रैपर बाहर फेंकते हैं. बड़ी तकलीफ होती है. Bugs me out. लेकिन आप ये नोट करें कि वो टिपिकली बच्चा नहीं फेंकता, वो बड़ा फेंकता है, राइट? और उसी बड़े के साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ होता है, और उसी बच्चे ने फिर इवेंचुअली बड़े होके वही चीज़ करनी है. तो अब आई फील सॉरी फॉर दैट किड बिकॉज उसने अपने आगे अपने सामने जो एग्जाम्पल देखी, वो एग्जाम्पल ये देखी कि अपनी गाड़ी को साफ रखना बच्चे सड़क की खैर है, राइट? अब वो हो सकता है कि इसको अनलॉक करने का तरीका यही है कि उस बच्चे को अगर स्कूल में ये बताया जाए कि सफाई क्या चीज़ है या अपनी इस मुल्क का ख्याल कैसे रखना है, तो आई फील दैट देयर इज दैट सेंसिबिलिटी टुवर्ड्स लॉ कंप्लायंस वुड बी बेटर. दैट्स व्हाट आई फील. Yeah, definitely. नहीं, I have this narrative के you become what you live and watch. So I have this thing के I can never dream of like, you know, trashing out stuff because एक दफ़ा मैंने rapper फेंका, my amma stopped the car, she was like, go back and pick it up. There you go. And I've never since ever thought of doing that. I'd rather put it in the car. Ahmed, I want to talk to you about कि ना जो हमारे बच्चे होते हैं, they have, हमने जैसे बात की, they're not very socially और उनको लॉ की इतनी समझ नहीं होती. I personally feel like कि मैं जब यूनिवर्सिटी से निकलूँगी ना, I should actually know how to be able to do taxes, how to, you know, do the basic stuff. Why are we not able to do that? As a 25-year-old girl, why would I not? I'm 20, but like after I pass out from the university, why am I not able to do that? Yeah. This is something very close to my heart. I know we were discussing it before. So I feel that people who are just getting into their universities should understand or should have a basic understanding of around personal finance. Filing your own taxes is just one example of that, but understanding on what personal finance is,
एंड व्हाट इट इंटेल्स, इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है, सेविंग्स क्या चीज़ है, सेविंग करने का क्या मतलब है, डिफरेंट सेविंग रेशियोज़ क्या हैं, कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपये में से आप कितने पैसे साइड पे रखेंगे, किसी एक एसेट के ऊपर आप अपनी पूरी सेविंग का कितना लगा सकते हैं, जो ये गेट रिच क्विक स्कीम्स हैं वो क्यों आपके लिए बुरी हैं और वो क्यों आपको उनके पीछे नहीं जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. सो आई बिलीव that as soon as you are in university, there should be a certain relationship with money. You should know where money comes from. You should know how it is earned. You should know how it is saved and what delayed gratification is. आज एक अच्छा फ़ोन ना लेके उसको अपनी आहिस्ता आहिस्ता वो कतरा कतरा सेव करने की consequences क्या है. So I feel that that's something that should be taught in schools. I have no doubt, no qualms about it. Yeah. Let's talk about the narrative. We've all heard it, that rich never pay taxes. ठीक है? I think it's especially true in Pakistan, but I think there are some things that work too well for the rich in Pakistan, that the policies and the loopholes that are created for the rich. Can a common man take advantage of it? Unfortunately, no. Rich do pay tax. It just so happens that as a percentage of the wealth or as a percentage of their income is far lower than somebody who is not well off. I also feel, and I think this is a misunderstood concept, inflation is also a tax. And if you are somebody jiski 40% of your income goes towards food, especially some, talking about somebody जिसकी 30,000 या 35,000 तनख्वाह है, तो उसका अगर फूड इतना बड़ा परसेंटेज है, तो फूड अगर महंगा होता है तो उसके लिए वो ज़्यादा पेनफुल है compared to you and me. The system is designed in such a way that it allows the people who are already well off, जिनके पास already assets हैं, वो they continue to prosper, or somebody who does not have those assets can find it more difficult. In a way, पाकिस्तान में social mobility जो है वो ज़्यादा मुश्किल है compared to the West. Why do you think कि 5 लाख लोग जो है वो पिछले साल पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए हैं? इस वजह से कि they believe that as professionals, जो भी लोग हैं, चाहे वो blue collar है, white collar है, they will be able to socially move themselves up from their current hierarchy. Yes. So social mobility क्योंकि पाकिस्तान में मुश्किल है, तो they feel कि वहाँ पे opportunity ज़्यादा है. क्यों कहते हैं अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? The idea is कि अगर आप 30-40 साल अपनी ज़िंदगी के अमेरिका में लगाएं तो from rags to riches is possible. That's the story. पाकिस्तान में entrepreneurship is that story, right? Unfortunately वो हर एक के लिए available नहीं है और उस तरह वो नहीं है, but still social mobility is very difficult, and I feel कि it remains a challenge. Yeah, for sure. अच्छा उज़ैर, we've talked about this narrative. आपने मुझे पहले भी बताया कि bad founders attract bad investors, and when times are tough, good ones attract the good investors. There's this narrative going on in Pakistan कि हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इट्स गोइंग बैक, या फिर पैसा है नहीं. एंड पाकिस्तान बीइंग अ वेरी कैशफुल सोसाइटी, आई थिंक पाकिस्तानी मार्केट इज वर्क्स ऑन कैश, राइट? तो बिकॉज it's day to day things are based on cash, the narrative is there is no cash. Why do you think कि ये narrative ऐसा क्यों फैलाया जा रहा है? ये फैलाया नहीं जा रहा, it's factually correct, right? So even if there is a lot of cash in the economy, वो कैश जो है वो ब्लैक मनी है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बिजनेसेस जहाँ पे आप अपना कैश छुपाना आसान है. रियल एस्टेट इज़ दैट एग्जांपल. क्यों ये एमनेस्टीज दी जाती हैं? रियल एस्टेट की एमनेस्टी आपको कह रही है कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का क्या मतलब है कि आपने टैक्स नहीं भरा हुआ है, तो वो आपने अगर कहीं पे पार करना है तो ये एमनेस्टी स्कीम है, और ये यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट में, इस प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा. you're encouraging investment in an area जहाँ जो कि एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. जो एक फाउंडर है वो अगर एक कंपनी बिल्ड कर रहा है और उसमें उसने इन्वेस्टमेंट रेज करनी है,
तो वो एक कंपनी है, उसने उसके अगेंस्ट शेयर्स इशू करने हैं, वो SECP में रिकॉर्ड में जाएगा और वो फॉर्मल है. सो द availability of formal cash is smaller. So in that sense, it is not a narrative that is being spread. It's a fact. I had once suggested somebody कि startups में आप जिस तरह एमनेस्टी आपने रियल एस्टेट में दी है उस तरह यहाँ भी दे दें तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होना शुरू हो जाएगी. तो बट some just a joke. I don't think it's ever going. Yeah, अच्छा, Uzair, let's talk about you being an extreme sportsman. You've done a lot of mountaineering. First, take us through what goes in your mind during that. So it's a very interesting part of my life, mountaineering. I started out as trekking, and it's a passion that I share with my wife. So when we got married, we went on our honeymoon to the base camp of Nanga Parbat. And it just was the start of our this joint venture. We have ended up trekking. We would often go over the weekend, for example, to do some small treks from time to time in the early days of our marriage. फिर बच्चे हो गए तो फिर it's a more of a planning. तो फिर हम साल में एक दफ़ा करते हैं. तो yes, ट्रैकिंग से फिर ग्रेजुएट करके it became mountaineering. कोविड में थोड़ा सा मुश्किल था, but in 2021 both me and Anam, my wife, we ended up going to Snow Lake, which is about 180 kilometer trek from Skardu to Hunza. Acha. It's a lot. Yes, so for 17 days we trekked. 17 days in total, but about 14 days or 12 days of trekking. अच्छा, नहीं आप बड़े सख्त minded लग रहे हैं, like even as a lawyer. अच्छा, चलें, let's talk about the young entrepreneurs that are coming into the market, very new. What do you want to say to them? Interestingly, Pakistan की economy में बहुत सारे gaps हैं. So if there is a problem and you feel that problem needs solving, solve it. Two things I'm very clear on कि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप कहें कि ये इसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं कुछ करूँगा तो कुछ नहीं मिलेगा. आई फील दैट देयर इज़ अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर. दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका उससे कोई रिलेटेड एक्सपीरियंस हो तो इट इज़ हेल्पफुल. फॉर एग्जांपल, आई कम फ्रॉम एग्रीकल्चर फैमिली. अगर मैं अपना बिजनेस करना चाहूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो इट वुड मेक लेस सेंस versus if I'm doing something in agriculture, right? Because it's something that's close to me. I've got extended family members and extended family who are in the agri space, and it that support system would be useful, right? So in that sense, finding something jo ke which is closer to my sphere of influence would be second suggestion. Third is ke stop trying to raise money and stop trying to find success in raising money. इन्वेस्टमेंट रेज, अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स खुद आपके पास आएंगे. एंड देयर इज एम्पल इन्वेस्टमेंट कैपिटल अवेलेबल इन द मार्केट. यू जस्ट हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड द ओनली वे टू डू दैट इज टू हैव अ गुड सॉलिड बिजनेस फाउंडेशन. एज लॉन्ग एज यू डू दैट, आई थिंक डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान इज सर्टनली पॉसिबल. अच्छा, उज़ैर, आई वांट टू आस्क यू के देयर इज़ अ साइकिल के पाकिस्तान की मार्केट जब मैच्योर होने लगती है ना, तो समथिंग हैपन्स politically or anything, it just goes back to phase one, right? You like thinking of Pakistan as more of like something that needs to be done to Pakistan, or is it like is it just very uncanny, it happens every time, or is it something that is being planned and done on purpose? No, I don't think it is being done planned or purpose. I genuinely don't think that's the case. The fundamental fact is that Pakistan has a lot of interest groups. Everybody is out there to protect their own interest. Everybody. And what eventually ends up happening is those interest groups collide, resulting in damage. And we as the public become the casualty. So I believe narrative हमें push करना चाहिए. वो narrative ये है कि national causes हैं, national causes को
पे दे शुड बी लाइन ऑन द सैंड कि इसके ऊपर ना पॉलिटिक्स होगी, ना इस पे कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा. सो वो नेशनल कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको आर्टिकुलेट करना बहुत ज़रूरी है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, समथिंग दैट वेरी क्लोज टू माय हार्ट and my family as well, and that's education. We believe that education in Pakistan is unfortunately a victim of being underfunded. Yeah. And उसका गवर्नमेंट्स का जनरली फोकस नहीं रहा उसमें. प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारा वो, क्योंकि गवर्नमेंट was not able to do a lot of the things it was supposed to do, उसमें फिर प्राइवेट सेक्टर आ गया. उस प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, बट उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा परसेंटेज पॉपुलेशन का वो पीछे रह गया. Yeah. सो मेरी फैमिली जो है वो 4-5 स्कूल्स जो है उनको स्पॉन्सर करती है. मेरे भाई से बात हो रही थी और वो मुझे बता रहा था कि टिपिकल स्टूडेंट बॉडी जो स्कूल की है वो है जो 500 या 1000 रुपये पर मंथ भी उसके बच्चे, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के, वो नहीं दे सकते. सो वो बच्चा जो है वो स्कूल में आता है. और अब वो एक और NGO है जिसके साथ वो मिलके कर रहे हैं. वो NGO जो है वो स्कूल में खाने देती है. एंड द थ्योरी है कि जी उस बच्चे को अनफॉर्चुनेटली शायद अपने घर से वो मैल नरिश्ड हो, उसको शायद खाना ना मिले, तो वो स्कूल आए, इसी बहाने स्कूल आएगा, इसी बहाने उसको खाना मिलेगा, तो फिर वो कुछ पढ़ भी जाएगा, कुछ सीख भी जाएगा. और वो टीचर्स, यू नो, माई फैमिली इज इन्वॉल्व इन पेइंग द फीस ऑफ दोज टीचर्स. तो आई बिलीव कि किसी ने बैठ के ये साजिश नहीं की कि यार ये बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा. दैट्स कोई साजिश नहीं है. इट जस्ट सो हैपन्स के मसलन क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो बड़े बड़े स्कूलों की चेनें हैं, जिसमें शायद आप भी पढ़ी हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, उन स्कूलों की चेनों को हम कहें कि जी आप जाके गरीबों को बच्चों पढ़ाएं. दे आर अ प्राइवेट एंटरप्राइज. वो अपने बिज़नेस करते हैं. उनको सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है जिनके पेरेंट्स जो हैं वो 20-20 हज़ार रुपया पर मंथ दे सकते हैं. उनका इंटरेस्ट नहीं है उस तरह का बच्चा जिसमें वो. सो कोई किसी ने, उन्होंने कोई साजिश नहीं की. इट्स जस्ट कि वो बच्चे अनफॉर्चुनेटली स्टेट और गवर्नमेंट का फोकस नहीं रहे. नहीं, डेफिनेटली देखें प्रायोरिटीज़ के अगर हम ऊपर बात करें तो I think there should have been a priority if they wanted Pakistan to go somewhere. Yes, I agree. So, Uzair, one last thing I want to talk to you about. You work very closely with the investors and, you know, the CEOs and founders. Do you think there should be a defined relationship between the co-founders, and the investors that defines some sort of mentorship and like gives them that, you know, basic path that they've already took to reach somewhere and make them be more successful? No, I believe the flow of communication should be the other way around. There should not be any formal structure. अच्छा फाउंडर वो है जो अपने इन्वेस्टर के पास खुद जाता है, जाके उसे गाइडेंस लेता है, उसको तंग करता है कि मेरी हेल्प करो, मेरे लिए ये दरवाज़ा खोल के दो, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके दो. ये एक अच्छे फाउंडर की एग्जांपल है, राइट. आई डोंट थिंक कि कोई फॉर्मल मैकेनिज्म चाहिए इसके लिए. इसकी दूसरी कन्वर्स साइड ये है कि एक इन्वेस्टर कहता है कि तुमने ये दरवाज़ा खोलना है तो मेरे से पूछ के खोलना है. और दूसरी तरफ वो फाउंडर है जो कहता है कि मैंने ये दरवाज़ा खोलना है, मेरी इसको दरवाजे खोलने में हेल्प करो. दोनों बात एक ही कर रहे हैं लेकिन करने का तरीका डिफरेंट है. I was talking about there should be a willingness among the investors and it should be, I think, their job. Yeah, for sure. So, और वो है भी, अगर आप realistically देखें तो that relationship exists. Most of the investors are actually happy to be a mentor and happy to be a support and happy to help cross bridges. It's for the founders to go and ask. Acha, Uzair, we're going to move towards another segment for our podcast. It's called My First Trip. तो जैसे को आपको पता होगा, like पाकिस्तान जो है ना, very ज़मीनी मुल्क. The people don't go out much. There aren't any neighbors to go to be honest. And people don't get that certain exposure that I think everyone should get and need. Let's talk about the first time for you that exposure came when you went somewhere abroad and
it just changed your mind? So the first time I went abroad, I believe that was to UK. I think this was 2005. This was immediately after my A-levels. And I was encouraged by my elder brother, who was already in UK, to come and visit him. Primarily because he wanted me to get that exposure, exactly the what you are talking about. So he wanted me to come and see him. And I ended up traveling throughout UK for a couple of weeks before I came back and then continued my study. So that was my first trip abroad. But the true learning experience that I got was a year later, जब मैं undergrad के लिए Cardiff गया. So 3 things happened when I was in Cardiff. Number 1, I was living alone for the first time. I was obviously, as a young boy, I was sheltered, protected by my family, and I lived in a very comfortable, bubbly life, as you said. But when I went there, I was all by myself. So I had to discover who I am as a person, what my values are, what my likes and dislikes are, etc. So that was the first thing. दूसरा मैंने खाना बनाना सीखा. So I learned to cook food for myself, and I can say without any hesitation, I'm a very bad cook. Oh, it's awesome. And I would make the easiest thing to cook, and that would give me the most amount of calories. That was my way of just passing through. मैं कोई वो नहीं था. और तीसरी चीज़ ये थी कि I ended up becoming friends with people from around the world, people who were from other countries. So I had a very good friend from Azerbaijan. So I had a very good friend from Malaysia, a friend from China, who we were all living together. तो मुझे उनके कल्चर्स का पता लगा, मुझे उनकी वैल्यूज़ का पता लगा, मुझे उनकी थिंकिंग का पता लगा. वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एवरी नाइट एंड जस्ट हैव अ गपशप. और हम 5-6 जो दोस्त थे, हमारी बहुत सारी वो पर्सनल ग्रोथ हुई एज अ रिजल्ट. सो आई फील कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी family was able to allow me to travel. Yeah. Uzair, thank you so much for coming on our podcast. We have a lovely time. We hope you come again to discuss further, and thank you so much.